Hey Jagannatha, hello friends. This is Basudev Panda. Welcome to Master of English. Like last, +2 second year English, the portrait of a lady, Unit 4. पढ़िबा as per the commitment ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପିଲା କାଲି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଯିବାର ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ମୋତେ ଅଫିସ୍ କାମରେ CHSC ସୋ ଆଜି ये यूनिट कंप्लीट କରିବା यूनिट कंप्लीट କରିଦେଲା ପରେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ 6:30 रे टेस्ट करिवार अछि को टेस्ट ना द बैलेड ऑफ फादर गिलिगान रो दुटा पैसेज रो टेस्ट करिवार अछि मंगलवार तो लेट्स स्टार्ट करिया पिले व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज मु जेते बेले निष्पत्ति नेली व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड अब्रॉड कहले विदेश पिले ABROAD अब्रॉड कहले विदेश foreign exactly. So when I decided to go abroad for further studies, माने further पाठ पढ़िया पे, I was sure, मु निश्चित थली I was sure my grandmother would be upset. जे मोर जेजे माँ, मो grandmother upset हवा, हैं? काहे कि I would be away for 5 years because I would be away for 5 years. कारण मु 5 वर्ष पे बाहर को जाऊँ थली, I would be away for 5 years. And at her age से जो बयस तार जो बयस होइतिला at her age one could never tell किछि भी कुहा जाई पारे माने किछि भी हेई पारे तार जो बयस थिला से बयस रे माने सीधा सीधा जदि कहबा से बयस रे मनुष्य जे कोनसे समय भी मरि जाई पारे हैं could never tell but my grandmother could but my grandmother could किंतु मो जेजे मा पर करे यह एक सामान्य कथा थिला मो जेजेमा कारण हम जानी जे से she can do anything she can change anything so grandmother could she was not even sentimental भाव प्रवण SENTIMENTAL sentimental कहले भाव प्रवण जहा को हमें आम भाषा रे कहबा इमोशनल बोली कि भाव प्रवण हवा So she was not even sentimental. टिके भी sentimental है नथिला से भाव प्रवण है नथिला sentimental. She came to leave me at the railway station but didn't talk or show any emotion. She came to leave me at the railway station. Railway station मते छाड़ीबा पई से आसिला मो सहित हमको सीएफ करियो पे. Getting me? Her lips moved in prayer and at the time when she was coming to leave me also at the time her lips moving constantly in inaudible prayers. Sei samar भी से प्रार्थना करूतला. Sei samar भी moved in prayers. Her mind was lost in prayer. She completely से prayer विषय तार प्रार्थना रे लगी रहितला. Her fingers were busy telling the beats of a rosary. तार सबु अंगूठी से माळो जपी बारे व्यस्त थिले. Beats of a rosary. Silently she kissed my forehead. और जदो मोर जीवार समय हला silently she kissed my forehead hug करके वो कपाल रे से चुम्बन देला forehead and when I left जदो फेरिली माने गली बाहरिली when I left I cherished कहले मेमोरी को साहित्य की रखिबा I cherished the moist imprint से ओदालिया स्पर्श moist imprint कहले ओदालिया स्पर्श I cherished so to keep something as a memory I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact. And I was thinking that kiss was the last sign of physical contact between she and me. Contact between us. तो मु से समर भाबुतली जे एई जो स्पर्शटा मो जेजेमार स्पर्शटा ई स्पर्श ही मो पई शेष स्पर्श आसिला बेलको मो जेजेमा मते माने मो सहित बेटिबो मते देखाबो सेमति किछि भी आउ हबो नाही माने जाउ ना but that was not so that was not so I was wrong सेमति किछि हला नाही after 5 years 5 वर्ष परे after 5 years I came back home मु घर को फेरिली I came back home and was met by her at the station and I met her at the station railway station रे से मते अपेक्षा करिथिला नवा पे आस्थिला she was there at the station I met her at the station and she didn't look a day older ताकू देखिले जणा पडुतला तार बयस सेठी अटकी जाईची गोटे दिन भी अधिका बयस हला वाला देखा जाउ नथिला didn't look a day older and she still had no time for words and sei समय रे मध्य she still had no time for words कोनोसी कथा से मो सहित हेला नाही नले
ଯେତେବେଳେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଭଲ ଅଛୁ କଣ ଖାଇଲୁ କଣ ପିଇଲୁ କେମିତି ଅଛୁ କେମିତି କଣ କରୁଥିଲୁ ଦୁନିଆ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ବଟ୍ नो not at all forwards and while she clasped clasped ଜାବୁଡି ଧରିବା clasped me in her arms ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ तार दुई हाथ रे कुंडई के धरिला clasped me in her arms I could hear her reciting her prayer मु सेते बेले भी सुनी पारुथिली तार prayer recitation सेते समय रे भी से prayer गाउतला ना even on the first day of my arrival से मोर आसीबार प्रथम दिन रे even on the first day of my arrival her happiest moments ता पाए सबुठारु खुशी रे समय और happiest moments were with the sparrows से घर चटिया मानक सहित से दिन भी मु आसीची नाती गोटे आसीची हैं नले से कोन से खुशी हवा कथा बट नॉट एट I cherished her sparrows whom she fed longer and with frivolous remarks and on that particular day on the day of my arrival what happens on that day she fed her sparrows for longer in comparison to other day से दिन से अधिक समय धरी से मानक कोइला and with frivolous remark frivolous 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 मीठा मीठा गाली frivolous remark कहले मीठा मीठा गाली बिले तो frivolous remarks माने से घर चटिया मान को गाली दे कहउतला in the evening संध्या रे कोन हाई बिले in the evening a change came over her ता भीतर गोटे अद्भुत पूर्व परिवर्तन देखा गला का भीतर मोर जेजेमा भीतर a change came over her she didn't pray से दिन से प्रार्थना कला नहीं for the first time in my life she didn't pray she collected the women of the neighborhood पड़ोसी रे थिबा स्त्री लोक मानन को से जमा करिछि neighborhood got an old drum गरु गोटे old माने पुराना ढोलो आनिला old drum and started to sing गीत गाई आरंभ कला जो लोक दिने ऑथर जाउथिले कोठी की पढिबा पई माने म्यूजिक पढिबा पई बोली से समय से कहउथला that music had lewd association is it the monopoly of harlot and beggars से आजी गोटे ढोलो आनी के बजाई कि निजे गीत गाउथला for several hours आ घंटा घंटा धरी सेमति नै कि गोटे मिनिट 2 मिनिट 10 मिनिट 15 मिनिट हाफ एन आवर several hours she thumped कहले बाडेइबा thumped 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 कहले बाडेइबा थम शब्द रु आइछि बिले थम कहले बुढा अंगूठी तो थम कहले अंगूठी रे कोनोसी जिंस को बाडै के साउंड प्रोड्यूस करिबा दैट इज थम्पिंग सो थम्ड व्हाट द सैगिंग स्किन कहले धुड़ धुड़ चमड़ा से माने से ढोलोटा फाटी जाय के चमड़ा धुड़ धुड़ होउतला सैगिंग स्किन ओहली थिबा चमड़ा सैगिंग स्किन्स ऑफ dilapidated dilapidated कहले जो जीर्ण शीर्ण हाँ जीर्ण शीर्ण dilapidated कहले जीर्ण से जो भंगा ढोलो एठी हमें भंगा ढोलो एठी थिला of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors and what she was singing which type of song she was singing sang the homecoming of warriors योद्धा माने घर को आसिले जो भलिया विजय गीतिका गांती से भलिया से गीत गाई की बजौथिला से दिन ढोलो we had to persuade कहले कोन पिले मनैबा persuade हां जणकू मनैबा अर्थ रे एठी विवरैछि persuade so we had to persuade her to stop to avoid overstraining बुढ़ा बुढ़ी लोक भी समय जदि काम करिवो से जगह रे ओवरस्ट्रेन होवार माने ताको स्ट्रेन झटका लागिबार भी संभावना अछि so to avoid overstrain which tried our level best to persuade her that was the first time since I had known her that she didn't pray and that was the first time since I had known her मु जेते दिनु ताको जानि थिली सेटा होची फर्स्ट टाइम कि सीए कोन कला बिले प्रार्थना कला नाही and that day she didn't pray
The next morning, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ, the next morning she was taken ill. ତା ଆର ଦିନ କଣ ହେଲା ପିଲେ, she was taken ill, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା? My grandmother was taken ill. It was a mild fever, ମାନେ କମ କମ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ତାକୁ, mild fever, and the doctor told us that it would go. ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଗଲା, it would go. ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଏଟା ଆମର ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି, ଏଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, it would go. But my grandmother thought differently. But as she was not normal, her thought were abnormal always, like that, and that situation also she was thinking differently. तार भावना गोटे अलग थिला. She told us that her end was near, and she told us, she stand for my grandmother, told us, हमको कहला, कौन कहला, that her end was near, माने तार मृत्यु सन्निकट हो गलानी, से अब बंचिबो नाही. Who told this? These are the words of grandmother. Well, she said that since only a few hours before the close of the last chapter, and she told the family members, as I have a few chapters left only, ମୋ ପାଖରେ କେବଳ କିଛିଟା ଅଧ୍ୟାୟ, କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣ, that chapter of life, she had omitted to pray. She had omitted to pray. ସେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କାହା ସହିତ କଥା ହବ ନାହିଁ କି କିଛି କରିବ ନାହିଁ. She was not going to waste any time talking to us, and she was not interested to talk with anybody. She was not going to waste time talking with anybody. तो से कौन कहला, डिक्लेरेशन कला जे मो सहित के कथा है कि समय डिस्टर्ब करना, मो पाखरे बहुत कम समय अछि, आ एई कम समय टिक मो भगवान को अर्पण करबा पई चाहूची, प्रेयर करके कटेबा पई चाहूची. We protested, आमे समस्ते विरोध कलु जे नाई जेजेमा, आ तू आम सहित कथा हो, आ लास्ट समय रे तू आम सहित कम से कम टाइम तक स्पेंड कर. बट सी इग्नोर्ड, प्रत्याख्यान कला. इग्नोर कहले कौन पहले, प्रत्याख्यान करवा, इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. आमर जो विरोध थिला से विरोध को से प्रत्याख्यान कला. आई डोंट केयर. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed. बेड ऊपर से शांति रे सोईथिला, कौन करिकी, and telling her beads, मालो जपुथिला. Even before we could suspect, संदेह करिबा, suspect माने doubt, संदेह करिबा. So even if we could suspect, आमे संदेह करिबा पूर्वरु, even before we could suspect, her lips stopped moving. What happens? Her lips stopped moving. तारा पार्टी जो अजोना प्रेयर से करूथिला, से जो चाली थिला, हरे कृष्ण हरे राम जो चाली थिला, एटा बंद हो गला, stopped moving, and the rosary fell from her lifeless finger, and rosary माळ, जप माळ से जो धरी थिला, fell, पड़ी गला, from her lifeless finger. तार माने से मृत्यु, तार मृत्यु हो जाइथिला, से मरि जाइथिला, तो ता से मर शरीर रु से जो मालटा थिला पड़ी जाइछि, तार हाथ रु पड़ी जाइछि. लाइफलेस फिंगर, ए पीसफुल पेलर, ए पीसफुल पेलर, पेलर कहले एटी फिकापण, एक शांत फिकापण, स्प्रेड ऑन हर फेस, ता मुह सतेज आउ देखा जाउ नथिला, फिका देखा जाउथिला ऑन हर फेस, एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. अब हम जानिलु जे से मरि जाइथिला, से औ नथिला, शी वाज डेड. We lifted her off, lift off, utheiba, OFF, lift off. We lifted her off the bed as is customary. आमे समस्त जानि थिबा, जते बेले जणे मनीष मरि जाए, ताकू बेड रो ओले की भुई रे, जहा को बाली सज्जा बोली कहमते, भुई रे माने पकई दिया जाए. So we lifted her off the bed as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. कौन कहलु, ताकू घोड़े दिया गला, गोटे लाल चदर रे घोड़े दिया गला. पंजाब रे यह एक प्रथा हिसाब रे, जते बेले जणे स्त्री लोक मरि जाए, ताकू गोटे लाल चदर घोड़े दिया जाए, रेड shroud. After a few hours of mourning, MOURN, mourn कहले शोक, MOURN, mourn कहले शोक. So after a few hours of mourning, किछ समय क्रंदन कला परे, we left her alone, ताकू आमे एकाकी छाड़ी देलु, we left her alone
to make arrangement for her funeral. Funeral कहले शव यात्रा, FUNERAL funeral कहले शव यात्रा। तो तार शव को पोड़ीबा पई नबार अछि ना, तो सेति भाई हम कोन गलु ताकू ता जगह छाड़ी देखि हम पळे आसु funeral। In the evening संध्या समय हेछि। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. So crude stretcher कहले कोकेई पिले, कंचा बाउंस रे तयारी हेथिबा कोकेई, crude stretcher, CRUDESTRETCHER कोकेई, crude stretcher कहले कोकेई। So ए जो crude stretcher रे कोन करा हला, crude stretcher to take her to be cremated। cremated कहले कोन, cremated एक्चुअली क्रिमेशन कहले पोतिबा, एटी क्रिमेटेड कहले पोतिबा पई मा दाह संस्कार, दाह संस्कार पई जते बेले निया गल नबा पई ताको। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated, and it was the time the sun was setting, सूर्यास्त समय थिला। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light। तो मो जेजेमा सोईथिबा से रूम कोठरी एवं से वेरांडा माने सुवर्ण रंग पड़िला बेले सूर्य किरण ताले ताले सूर्य किरण जेमती गोल्डन लाइट दिए से समय तो सुनार गोटे प्रलेप दला भलिया देखा जाउ थाय से समय से सूर्य किरण पड़ी। Wrapped we stopped halfway in the courtyard। courtyard कहले अगणा, अगणार अधा बाटरे आम रहिबा पई बाध्य हेलु। We stopped halfway in the courtyard all over the veranda, से पूरा वरांडा रे चारियाडे, all over the veranda and in her room एवं तार कोठरी रे, you know, right up to where she lay dead, जो पर्यंत जो जगह रे से डेड है कि मृत हिसाब रे पड़ी थिला, dead and stiff, dead and stiff, wrapped, you know, wrapped in the red shroud, से लाल कपड़ा गुड़ा है किसे जो उठी पड़ी थिला red shroud, thousand of sparrows, हजार हजार घर चटिया पिले, thousand of sparrows, you know, thousands of sparrows sat scattered on the floor। इतस्तत भाव रे चारियाडे बारंडार चारियाडे तार रूम रो चारियाडे तार सब जोटी थिला से ऊपर हजार हजार घर चटिया चारियाडे पूरा माने विस्तार हे की रही थिले, हजार हजार घर चटिया। There was no chirruping, there was no chirruping। Here the poet, you know, the writer wanted to express the relation of animal with the bird, how, you know, animal and birds or animal and any creature, they are emotionally connected, how the connection of emotion work on animals even if you are using them, if you are taking care of them। This is the point the poet want to, you know, the writer want to focus here। So we felt sorry for the birds, सेही समय पक्षी मानक पई आमुक भी दुख लागिला। And my mother fed some bread for them। मो मां कोन कले जाई करी किछि ब्रेड आनिले से मान को खाइबा को दवा पई, fed some bread for them। She broke it into little crumbs, 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 टुकड़ा, टुकड़ा गोटे शब्द थिला बीट, बीट कहले भी टुकड़ा, crumbs कहले भी टुकड़ा। So crumbs, then little crumbs, the way my grandmother used to। मो जेजेमा जमते टुकड़ा करके छोट छोट करके से मन को दोथला, मो मां भी सेही भलिया कले। And threw it to them, तापरे कोन करिसंती देई दे दो, फिंगी देइचंती से मन को खाओ बोली। Threw it to them। The sparrow took no notice of the bread, but the sparrow took no notice of the bread। से जो ब्रेड को देखी भी ना हमते से माने चाही भी ना हमते जमा, no notice of the bread। And when we carried my grandmother's corpse, dead body, CORPSE, corpse, dead body, corpse off, जते बेले हमें we carried the corpse off, तापरे कोई जिबिले they flew away quietly, से माने उड़ी गले निरबर सहित,
they flew away quietly. They stand for the sparrows. Flew away, उड़ी गले quietly, शांत भाव रे, without any sound. There was no sound at all. Next morning, ता परवर्ती दिन, next morning, the sweeper, झाड़ू वाला sweeper जेतले आसिला, swept the bread crumbs. कौन कला? Swept the bread crumbs. से रोटी टुकड़ा, रोटी खंड सब पड़ी देला, से सब को ओळेला into the dustbin. आउ नहीं कि dustbin रे पकेला. तो ये थिला पिले last unit. कौन? Yes, this is the last unit. Last unit of the portrait of a lady. पिले वर्तमान इंग्लिश रो तीनटा पाठ हमर सरला जेमती. गोटे द डॉक्टर स्वord, द डॉक्टर स्वord रो हमें ऑलरेडी करी सारी छे परीक्षा. वर्तमान द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी आउ हम पाखे रहिला द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन. ये दुईटा चैप्टर रो हमको टेस्ट करिवार अछि. द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन आज टेस्ट हबो. हां आउ शुक्रवार दिन तार रिजल्ट अनाउंस करबी. बिले मु फेरिले आज टेस्ट मु आज करिबी, बट शुक्रवार दिन रिजल्ट अनाउंस करबी. आउ शुक्रवार दिन यार टेस्ट हबो. ए जो चैप्टर टा रहिला द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी आउ यार टोटल पैसेज सिलेक्शन पैसेज आसंता काली वीडियो माध्यम तुमको दे देबी. ओके, सो कुआरे जीवा नहीं. क्लास रेकॉर्डेड वीडियो सब तुम आसीबो. पिले चिंता करिवार नहीं. रेकॉर्डेड वीडियो सब आसीबो तुम मानक पई. तो रहिबा चैनल सहित रहिबा. मु जाउची यार अर्थ नो क्लास हबो नहीं. क्लास हबो. क्लास विल रेगुलर क्लासेस विल बी देयर. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग. स्टे मास्टर.